Satyanarayana Madami of 128 Air Defence Missile Regiment. On show, the military might of India. The 128 Air Defence Missile Regiment was raised in 1951 and the regiment is commonly known as Sky Gladiators. The motto of the Army Air Defence is Akashe Shatrun Jahi. These are the first of the marching contingents, the Parachute Regiment, led by Major Nikhil Kumar Maurya. They are better known as Red Devils or Paras. The Red Devils never walk in a parade. They are always on the double, which goes to show the high fitness levels that are required to be a para. They are chanting, "Hum Bharat ke veer aur hum apne desh ke rakshak, jati bhedbhav ko mitaye." Grenadiers Regiment is being led by Major Anirudh Nair of the 20th Battalion. This is one of the most decorated regiments of the Indian Army with several battle honours and 3 Paramveer Chakras. The motto of the regiment is Naam, Namak aur Nishan, and the war cry Sarvada Shaktishali. बैंड की धुन कानों में और 80 बैंड वादकों का ये संयुक्त बैंड दस्ता नेतृत्व कर रहे हैं रिसालदार मेजर राजेंद्र सिंह। बैंड धुन बजा रहा है अरुण वैद्य महावीर। सलामी मंच के सामने खालसाओं की सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का ये दस्ता मेजर अंजुम गोरका की कमान में, केसरिया पगड़ी चुस्त कदम। पुरानी सिख पायनियर से गठित ये रेजिमेंट के वर्तमान स्वरूप का पुनर्गठन 1941 में किया गया था। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य देख देख फतेह, युद्ध घोष, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। कैप्टन राहुल सिंह कटारिया की कमान में ये कुमाऊं रेजिमेंट का दस्ता भारतीय सेना की सबसे अधिक अलंकृत रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, जिसे सबसे पहले परमवीर चक्र प्राप्त करने का गौरव हासिल है। आदर्श वाक्य पराक्रमो विजयते, युद्ध घोष, कालिका माता की जय। Going past the saluting base, the combined band of 11 Gorkha Rifles Regimental Centre, 39 Gorkha Training Centre, Kumaon Regimental Centre and Garhwal Rifles Regimental Centre. The tune Vijay Rath. And this is the Corps of Signals, marching contingent led by Captain Tanya Shergill, a 4th generation army officer. The motto of the Corps, Tivra Chaukas, which means swift and secure. Going past the saluting
Base, marching for the first time on Rajpath on Republic Day. The marching contingent of the Corps of Army Air Defence, led by Captain Vikas Kumar Sahu of the AAD Centre, recently awarded the colours by the President of India. राजपथ पर सलामी मंच के सामने अब पहुंच चुका है बंगाल इंजीनियर्स ग्रुप एंड सेंटर, ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स ट्रेनिंग सेंटर, 3 EME सेंटर और मद्रास रेजिमेंटल सेंटर के 80 बैंड वादकों का दस्ता। नेतृत्व सूबेदार विजय थापा। ये बैंड सैम बहादुर की धुन बजा रहा है। दर्शक रोमांचित इस राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनते हुए। इकहत्तरवें गणतंत्र दिवस की परेड शान से आगे बढ़ रही है राजपथ पर। देशभक्ति, गौरव, अविस्मरणीय अवसर देश के हर नागरिक के लिए। हमारे मुख्य अतिथि ब्राजील के राष्ट्रपति और अब सलामी मंच के सामने पूर्व सैनिकों की झांकी। राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा करने वाले सैनिकों को ये झांकी पहचान और सम्मान प्रदान करती है। ये झांकी सैन्य बल के पीछे सैन्य बल को चरितार्थ कर रही है। और अब नौसेना का ब्रास बैंड, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर विंसेंट जॉनसन, म्यूजिशियन द्वितीय क्लास के नेतृत्व में जय भारती की जोशीली धुन बजाते हुए भारतीय नौसेना का विश्व विख्यात ब्रास बैंड दस्ता सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। And this is the brilliance of the naval marching contingent passing by the saluting dais now. A smart salute there by Lieutenant Jitin Malkat as contingent commander. And we have Sub-Lieutenant Spandana Reddy, Sub-Lieutenant Ishu Tiwari, and Sub-Lieutenant Lata Shri as platoon commanders, the naval marching contingent. And this is the first view of the naval tableau. The Indian Navy, silent, strong, and swift. The tableau showcases the might and firepower of the Navy in all 3 dimensions: surface, subsurface, and air, portrayed through the state-of-the-art assets. It also showcases the Navy's commitment to nation building. The indigenous aircraft carrier Vikrant, under construction at the Cochin Shipyard Limited, is an example of Make in India. In unmistakable Air Force blue, this is the Air Force Band. Warrant Officer Ashok Kumar leading his musicians, and the melody Sound Barrier Quick March. The band comprises of 3 drum majors and 72 musicians.
smart air warriors of the Air Force marching contingent being led by Flight Lieutenant Srikant Sarma, Flight Lieutenant Mohit Kumar, Flight Lieutenant Reema Rai and Flight Officer Vishnu Prasad follow the commander. Smart marching as if in one breath. And this is the Air Force tableau. The theme, Indian Air Force, the cutting edge. It showcases scaled-down models of the Rafale aircraft, Tejas, light combat helicopter, Akash missile system, and Astra missiles. The officers are attired in their flying overalls and look ready to take to the skies. And this is the tableau of the Defense Research and Development Organization, DRDO. It showcases India's anti-satellite weapon system, ASAT, Mission Shakti, commanded by Project Director Y. Srinivas Rao, one of the outstanding scientists of DRDO. Space has become an important dimension of the country's economic and military superiority. भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन और सलामी मंच के सामने लेफ्टिनेंट विवेक विजय मोरे की कमान में वायु रक्षा सामरिक नियंत्रण रेडार यानी ADTCR। ये रेडार विशाल वायु क्षेत्र की निगरानी, विभिन्न हवाई लक्ष्यों का पता लगाना, शत्रु या मित्र की पहचान, कमान केंद्र तक डेटा पहुंचाने जैसे कई महत्वपूर्ण काम करता है। इसे मैदान, पहाड़, रेगिस्तान में पूर्व चेतावनी के लिए तैनात किया जा सकता है। राजपथ पर आगे बढ़ती परेड जो इंडिया गेट से गुजरती हुई अपने गंतव्य लाल किले की ओर। समंदर में जीवन रक्षक यानी तटरक्षक बल का दस्ता कमान संभाली है डिप्टी कमांडेंट गौरव शर्मा ने। समुद्र तट के क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करके वयम रक्षामः के आदर्श को चरितार्थ करता हुआ इस बल ने हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने में मदद की है। देश के हम हैं रक्षक, ये जोशीली धुन सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का बैंड बजा रहा है और कमान संभाली है इंस्पेक्टर शमशेर लाल ने। Following their band is the CRPF marching contingent led by Assistant Commandant Naresh Kumar. The CRPF is the largest and also one of the oldest paramilitary forces in the world. The force has distinguished itself not only in combating insurgency and terrorism, but also through its duties in rescue and relief operations. The CRPF has the highest tally of medals awarded to any police force. Their motto, service and loyalty. And now, the Indo-Tibetan Border Police brass band going past the saluting base, led by Bandmaster Inspector Divakar Prasad. The tune, very well known, Sare Jahan Se Acha, Hindustan Hamara.
We're now adding to the sunshine on Rajpath, the Indo-Tibetan Border Police marching contingent, the contingent of Himveers, led by Assistant Commandant Amit Yadav. The brave and tenacious sentinels of our northern borders operate like snow leopards in temperatures up to minus 45 degrees Celsius and at altitudes of more than 18,700 feet. And they've also scaled 200 peaks in the Indian Himalayas and abroad, including the Mount Everest 4 times. राजपथ पर सलामी मंच के सामने पहुंचता हुआ सब इंस्पेक्टर करण सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का बैंड वादकों का दस्ता, जिसमें 85 बैंड वादक शामिल, अमर सेनानी की धुन बजा रहा है। दर्शकों द्वारा करतल ध्वनि से अभिनंदन। और यह है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का मार्चिंग कंटिंजेंट डिप्टी कमांडेंट श्री प्रभ सिमरन सिंह के नेतृत्व में। आदर्श वाक्य संरक्षण एवं सुरक्षा। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के मार्चिंग दस्ते आगे बढ़ते हुए, और यह है दिल्ली पुलिस का बैंड सलामी मंच के सामने। दिल्ली पुलिस गीत की जोशीली धुन बजाते हुए निकल रहा है, जिसका नेतृत्व सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह कर रहे हैं। इस दस्ते में 4 सब इंस्पेक्टर और दिल्ली पुलिस के 68 जवान शामिल हैं। राजपथ पर शान से आगे बढ़ रहा अगला दस्ता दिल्ली पुलिस का मार्चिंग कंटिंजेंट असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर सुधांशु धामा के नेतृत्व में। इस दस्ते में शामिल सभी जवान 6 फुट से ज्यादा ऊंचे। खास बात 1950 से लेकर आज तक ये लगातार गणतंत्र दिवस परेड में शामिल रहा है और 14 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते की ट्रॉफी हासिल की है। This is a view from our camera on India Gate, a panorama of the vista of Rajpath and a spectacular parade underway. I'm bringing so much cheer and intrigue to Rajpath. It's the BSF Camel contingent in all its brilliance under the command of Deputy Commandant Ghanshyam Singh. These regal camels of the BSF, or ships of the desert, are dependable companions in the inhospitable terrains of Rajasthan and the Run of Kutch. And these camel-mounted troops have been instrumental in successfully tracking down notorious smugglers and extremists of Rajasthan and Gujarat frontiers. It takes 75 different items to dress up each camel with complete ceremonial splendor. And they're truly dazzling for this very special celebration. The BSF Camel Band, the only band of its kind in the world. Bandmaster Sub-Inspector Bodhraj leading these bandsmen, and the melody that they're playing, Hum Hai Seema Suraksha Bal. The camels gorgeously caparisoned and sailing and gliding down Rajpath, heads held high and oh so proud.
best of the best NCC cadets on Rajpath. The NCC Boys Band, led by Master Cadet Under Officer Yash Jain. And the band is playing the tune Kadam Kadam Badhai Ja. Contingent Commander Junior Under Officer Charan Deep Singh Bhadoria, leading the NCC Boys Marching Contingent. The cadets have been drawn from all 17 directorates of NCC. And this is a familiar sight. In fact, it has been so for the last 54 years. The band of the Birla Balika Vidyapeeth Pilani, led by Senior Under Officer Charu Surana. They are playing the tune Sare Jahan Se Acha Hindustan Hamara. सीनियर अंडर ऑफिसर श्रीष्मा हेगड़े के नेतृत्व में एनसीसी सीनियर डिवीजन की 159 छात्राओं का दस्ता सलामी मंच के सामने। इस दस्ते में शामिल कैडेटों को देश के सभी 17 निदेशालयों से चुना गया है। राजपथ पर अब राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस का मार्चिंग दस्ता कंटिंजेंट कमांडर चेतन गुप्ता के नेतृत्व में बापू के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 में मात्र 40,000 की संख्या से शुरू होकर एनएसएस में अब 39 लाख से अधिक स्वयंसेवक हैं। आदर्श वाक्य, मैं नहीं, आप। सूबेदार मेजर मलकीत सिंह के नेतृत्व में 130 संगीतकारों का बैंड, भारतीय सेना का ये मास्ट पाइप्स एंड ड्रम्स बैंड, इन संगीतकारों को 13 यूनिट्स और सेंटर से लिया गया है। ये धुन बजा रहे हैं अल्मोड़ा। Perfect synergy, perfect marching, and a perfect picture. And now Rajpath will be extending an invitation to color, culture, and creativity. While the front part of the parade is on its way to Red Fort. The tableau from Chhattisgarh, traditional crafts and ornaments,